Yes. Am I audible? Okay. Fine. So we were seeing the component diagram in the last class. Fine. We have seen that this is how a component looks, and to connect components or to show relationship between two components, you need an interface compulsorily. Fine. These are the representations of components. This was the representation till UML 1.4. This is how we represent it currently. If you want to use a class diagram to represent a component, you can do that also, but you have to use the stereotype as component. Voice is fine, na? It's audible. Fine. Then we have seen that there are two kind of interfaces, basically required interface and provided interface. If a component is connected with a provided interface, this component will realize this provided interface, or whatever the functions are that are declared in this provided interface, that will be implemented by this component only. And this is a required interface, means this component one requires this interface, this uses this interface. Okay. Then we have seen how you can connect this you required interface and provided interface. Either you can use a dependency arrow like this, or you can use basically you can merge them. Assembly line connector, this is known as assembly line connector. This is no another specific symbol. This is just that we have connected this required interface with the provided interface, बस दोनों को पास में लेके आ गए. And this is known as assembly line connector. Fine. So suppose this is your order system component. So order system component uses product lookup, and this product lookup interface is provided by inventory system. So indirectly order system component is dependent on inventory system component. Similarly, order system component is dependent on customer database component. Then to show the same relationships, for example, this pet component realizes this animal interface. So this is the realize arrow. And keep one thing in mind, whatever relationships you have seen in your class diagram, aggregation ho, composition ho, inheritance ho, sorry, inheritance हो, normal dependency हो, सारे के सारे relationships can be between component diagrams also. मतलब दो component diagrams में inheritance भी हो सकता है, there can be aggregation also, there can be composition also. जो भी class diagrams में relationships आपसे पढ़े हैं, those same relationships are applicable component diagrams also. Fine. And this is the dependency arrow. Why? Because this pet component is dependent on this license component, or this pet component uses or requires this license component. So this pet component is dependent on this license component. These two have the same meaning. Just it is that we have shown this with the help of provided and required interface, and here we have used the realization and dependency arrows. The meaning of them both of them is same. The advantage that this representation gives you is that you can now write some functions in the interfaces also. Okay, अगर suppose you have this animal interface, यहाँ पे पहले if you are using this provided interface representation for animal, for the animal you are using the provided interface representation is circle wala, you cannot write any functions or you cannot write any attributes inside this animal.
interface. But if you are using this representation, that class diagram representation, where we have used a stereotype known as interface for the animal, you can use or you can write some functions here. You can declare some functions here like this. Like this. You can declare some functions in the interface. अगर इसकी जगह ये required या provided use करते तो इसमें कुछ define नहीं कर सकते. Fine. These things we have seen in the previous class. ये same वही है. So any doubts you have till now? This was the component compartment. Component compartment का मतलब कुछ नहीं है. एक ही component के अंदर we will use the class representation. जो class diagram वाला होता है उसमें we will use a stereotype of component. And उसमें जो second column होता है यहाँ पे we will write all the interfaces also and all the required interfaces also for this particular component. And the third column is for the artifacts. Artifacts are the files that will implement a component. .jr file or .dll files. So till this point we have seen in the last class. You have any doubts? Fine. So now basically you can view components in two ways. One is known as a black box view and another one is known as a white box view. Black box view means you cannot see inside a component. Obviously everything is black. It is a opaque view. You cannot see what is inside a component. अभी तक हम लोग जो देखते हुए आ रहे हैं ये सारी चीजें, ये सारे diagrams, whatever we are seeing till now, this is black box component view. Because you see only a component known as order. इस order component के अंदर exactly क्या होना, right? Exactly कौन कौन सी classes, इसके अंदर भी classes हो सकती है ना, एक component के अंदर भी classes हो सकती हैं. This order component is not showing us that. So this is a black box view. That you are just seeing some components like this, and they are related to some interfaces like this. So only a black box or opaque view you are seeing. We cannot see inside this component. What are the classes? इस component के अंदर भी classes हो सकती हैं और इसके अंदर भी interfaces हो सकते हैं. But black box view doesn't give us that functionality. Okay, so in a black box view, basically you can see the components. It's required and provided interfaces and the relationships to other components. Relies or dependent वाला. ये चीजें are visible in a black box view. But if we talk about a white box view, just for example, we will see in a short while. So black box view basically is transparent. You can see inside a component. Inside a component, there are some classes and they are connected to each other with some. हो सकता है एक component हो. There could be a component जिसके अंदर there can be two classes जिनकी parent class भी हो सकती है. There can be inheritance also. So a white box view allows you to see inside the component how many classes you have, what are the relationships between those classes. Multiplicities भी हो सकते हैं यहाँ पे 1:2 star वाली. Okay, everything is possible and everything will be viewable. So all the classes, उनके interfaces, classes के सिवा भी कुछ हो सकता है component के अंदर एक use case diagram बनाओ पूरा का पूरा. This is also possible. वैसा होता नहीं है component के अंदर generally we have only classes only, but it is possible. Fine. See this. This is an example of a black box view. Okay, what you are seeing? You are seeing a order management component that is providing orders interface. Means whatever functions that are defined in the orders interface, that will be implemented by order management component. And this order management component requires customer lookup interface also, and it requires accounts interface also, that are implemented by customer database component and that are implemented by accounting system component. This order management system also requires a product lookup component and that is implemented by inventory system component. किसी को डायग्राम पढ़ने में दिक्कत है? दिक्कत है तो अभी पूछ लो, वरना एग्जाम में फिर दिक्कत होगी. Any doubts you have? All of you. Okay. So this is a black box view. Why this is a black box view? Because you are seeing components, 1 component, 2 component, 3 component, 4 component. You are seeing interfaces 1, 2, 3, and you are seeing relationships between components. जैसे ये दोनों components. So it's like one is requiring something and other is fulfilling something. Yeah. यही है ना? ये जो है ये सर्किल वाइन ग्लास वाला, ये
यहाँ पे दो इंटरफेस है, एक ये रिक्वायर्ड इंटरफेस एंड अदर वन इज द प्रोवाइडेड इंटरफेस, बट दोनों का ही नाम सेम है, दोनों ही सेम इंटरफेस है। बट हो ये रहा है कि जो ऑर्डर मैनेजमेंट कंपोनेंट है दिस, ये रिक्वायर करता है इस कंपोनेंट लुकअप इंटरफेस को, दिस नीड्स दिस कंपोनेंट लुकअप इंटरफेस, इसको जरूरत है इस कस्टमर लुकअप इंटरफेस की। और जो कस्टमर लुकअप इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट करता है ये कस्टमर डेटाबेस कंपोनेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट कंपोनेंट है क्षितेश, that needs this customer lookup interface, or a customer lookup interface is implemented by this customer database. So indirectly जो order management component है that is depending on this customer database to fulfill its requirements. So this is basically a black box view because you cannot see what is inside this order management system. इस order management system के अंदर exactly कौन कौन सी classes हैं, क्या क्या interfaces हैं, क्या क्या relationships है, you cannot see. If you want that, you need to go for the white box view. This is the white box view of this order management component. सिर्फ इसी का बनाया, बाकी सबका भी ऐसे ही बनेगा। ओके, तो अब देखो व्हाइट बॉक्स व्यू में क्या हो रहा है, यू आर सीइंग इनसाइड अ कंपोनेंट, इनसाइड दिस ऑर्डर मैनेजमेंट कंपोनेंट यू आर हैविंग थ्री क्लासेस, एक ऑर्डर क्लास है, एक प्रोडक्ट क्लास है, दे आर रिलेटेड टू वन टू मैनी रिलेशनशिप, दे आर कनेक्टेड बाय वन टू मैनी मल्टीप्लिसिटी। ओके, एक सेल्स टैक्स कैलकुलेटर क्लास भी है, दैट इज डिपेंडेंट। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास डायग्राम में दिस इज द सिंबल ऑफ डिपेंडेंसी, दैट दिस सेल्स टैक्स कैलकुलेटर, ये इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। एग्जाम में यही देके मैं इनहेरिटेंस पूछूंगा, इनहेरिटेंस का सिंबल ये नहीं होता क्लास डायग्राम में, इनहेरिटेंस का सिंबल ये होता है। बी वेरी क्लियर विद द सिंबल्स। फाइन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिपेंडेंसी एरो। So this sales tax calculator is depend sorry, sales tax calculator is dependent on this order class. Fine. So in the white box view, basically you are seeing inside this component, order management component, what are the classes we have, how these classes are connected, this order class and this product class is connected with association relationship, ये association relationship है, इसमें इनकी multiplicity है one to many। एक और class है that is known as sales tax calculator that is dependent on this order class। and if you see, यहाँ पे we have orders interface, we have customer lookup interface, we have accounts interface, we have प्रोडक्ट लुकअप इंटरफेस, बट ये तीनों यूजर्स वाले इंटरफेस है, ये रिक्वायर्ड वाले नहीं है। इफ यू सी इन द ओरिजिनल डायग्राम इट वाज यूजर्स एंड रिक्वायर्ड बोथ, हमने यहाँ रिक्वायर्ड क्यों नहीं बनाया, सिर्फ यूजर्स वाला क्यों बनाया, व्हाई हियर वी हैवंट मेड द रिक्वायर्ड इंटरफेस आल्सो, सिर्फ यूजर्स क्यों बनाया। टेल मी व्हाई वी हैव डन दैट। यस, गुड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ सिंगल कंपोनेंट ना, सिर्फ हम लोग अभी ऑर्डर मैनेजमेंट कंपोनेंट की बात कर, order management components related, what are the interfaces are there, we will talk about them only. So if you see in the original diagram, the interfaces related to order management component one, component वन, एक था provided interface orders, और बाकी तीन थे आपके required interfaces, product lookup, accounts and customer lookup, these three were required interfaces and this was the provided interface. So the same thing is here, that a white box view basically gives you a detailed view of a component. You can now look inside a component and see what are the classes that component have, how those classes are related to each other, what are the multiplicities those classes have, fine, what are the interfaces related to that component, all those things you can see. So it depends what kind of detailing you need. Generally people go for this black box view only, okay, we don't go for much detailing, but if needed you can go for white box testing, or sorry, white box view also, fine. Now comes the important thing that is known as ports and delegation connectors. पोर्ट्स क्या होता है, देखो पोर्ट्स ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, पोर्ट इज लाइक अ डोर, व्हाई आई एम सेइंग इट अ डोर इज, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस इज अ पोर्ट। इसका यूज क्या होता है, इसके दो यूजेस हैं। फर्स्ट यूज इज, सपोज दिस इज माय कंपोनेंट C1, इस कंपोनेंट के सपोज यू हैव इंटरफेस 3, you have interface 4, you have interface 1, you have interface, now if I want to, अब देखो ये दोनों ये इंटरफेसेस अलग हैं, अभी तक हम लोग ऐसे इंटरफेस देखते हुए आ रहे हैं,
दोनों ही इंटरफेस का नाम सेम था, दोनों ही इंटरफेस सेम थे, बस इस साइड से रिक्वायर हो रहा था, इस साइड प्रोवाइडेड हो रहा था. This was the difference. If you see this diagram, this is interface 3, this is a different interface, and this is a different interface altogether. But if you want to show that interface 3 and interface 4 are somewhat connected to each other, सेम नहीं है एक दूसरे से, लेकिन किसी तरह से कनेक्टेड है, या समवॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इसको शो करने के लिए यू कैन यूज पोर्ट्स. अगर एक ही पोर्ट से दो इंटरफेस जा रहे हैं, एक इंटरफेस 3, एक इंटरफेस 4, if two interfaces are connected to a single port, it means that those two interfaces are related to each other. Or this is the statement that can be asked in the class, in the test. If two interfaces are connected to a port, this simply means that those two interfaces are related to each other somewhat. इसका example देखेंगे अभी. For example, can I say that interface 1 and interface 2 are related to each other? Yes or no? Vishal Kumar, you are present? बताओ विशाल. इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 3 कनेक्टेड है या नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं? इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 3. Interface 1 and interface 3, they are related to each other. Vishal, युवराज किशोर सिंह present. बताओ युवराज, इंटरफेस 1 है इंटरफेस 3 कनेक्टेड है एक दूसरे से या नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है या कनेक्टेड नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं? इज इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर? अर्जुन प्रेजेंट. अर्जुन गुप्ता प्रेजेंट. अर्जुन गुप्ता, यू आर प्रेजेंट और नॉट? इंटरफेस 1 और इंटरफेस 3 कनेक्टेड है एक दूसरे से या नहीं, रिलेटेड है एक दूसरे से या नहीं? So interface 1 and interface 3 are not related to each other because they are not connected to the same port. अब ये यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको भी सुन के लग रहा होगा इतना इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट थिंग that why we need ports in a component diagram is for delegation connectors. My voice is fine everyone or not? Hmm. So the main important reason why we are going to use ports are this delegation connectors. For example, पहले ये देख लो. Okay, suppose you have a warehouse component जिसमें you have furniture delivery you interface, you have a appliance delivery interface, you have a shipping interface, and you have a rate calculator interface. So this diagram basically tells you that future delivery, furniture delivery, and appliance delivery, these two interfaces are related to each other because they are connected to the same port. This is the only meaning. Shipping interface and rate calculator interface are related to each other somewhat because they are connected to the same port. अब इसका जो इंपॉर्टेंट यूज आता है वो आता है डेलीगेशन कनेक्टर में. पोर्ट्स का जो इंपॉर्टेंट यूज आता है दैट इज फॉर डेलीगेशन कनेक्टर्स. डेलीगेशन कनेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज दिस इज अ व्हाइट बॉक्स व्यू, दिस इज अ व्हाइट बॉक्स व्यू बिकॉज यू आर सीइंग इनसाइड द कंपोनेंट. ये व्हाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स व्यू है? This is a white box view, right? Because you are seeing inside a component. So inside this order management component, you are having two classes, order list and order. Right?
these two classes are connected with a association. इतना हमें दिख रहा है. Now you have two ports, port A, port 1 and port 2, and you have two interfaces, data source interface and inventory checker interface. So here this order manager component basically provides this data source interface. Means this order manager component will implement this data source interface. So no, this order manager component will implement this data source interface. सही है या गलत स्टेटमेंट है? And this order management component will also implement this inventory checker interface. True or false? This order manager component will also implement this inventory checker interface. This is a false statement. Why? Because order manager basically uses or requires this inventory checker interface. अब लेकिन ये एक जनरल स्टेटमेंट तो हमने बोल दी कि ऑर्डर मैनेजर जो है वो इंप्लीमेंट करता है इस डेटा सोर्स इंटरफेस को और ये रिक्वायर करता है इस इन्वेंटरी चेकर इंटरफेस को. बट एग्जैक्टली हु इंप्लीमेंट्स दिस डेटा सोर्स इंटरफेस इनसाइड दिस ऑर्डर मैनेजर? ऑर्डर मैनेजर कंपोनेंट के अंदर दो पार्ट है. ऑर्डर मैनेजर कंपोनेंट के अंदर वी हैव टू पार्ट्स, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर. दो क्लासेस हैं. एग्जैक्टली कौन सी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है और एग्जैक्टली कौन सी क्लास इसको रिक्वायर कर रही है, अगर आपको ये डेटा प्रोवाइड करना है सो यू विल यूज अ डेलीगेशन पोर्ट और डेलीगेशन रिलेशनशिप. वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है. दिस एरो, अ सिंगल एरो विद अ हेड लाइक दिस. अब इसको पढ़ना कैसे? दिस हाउ यू विल रीड दिस डायग्राम. अगर पोर्ट से क्लास की तरफ डेलीगेशन कनेक्टर जा रहा है, इफ द डेलीगेशन कनेक्टर इज मूविंग फ्रॉम द पोर्ट टू एनी क्लास, तो इसका मतलब ये है that this interface data source will be implemented by this order list class. अगर पोर्ट से क्लास की तरफ एरो जा रहा है तो सिंपली इसका मतलब ये है that this data source interface will be implemented by this order list class. अगर क्लास से पोर्ट की तरफ एरो जा रहा है तो इसका मतलब है that this class needs this inventory checker interface. So when I make a general statement that this order management component will implement this data source interface, तो उसका मतलब यह है कि exactly this order list class is going to implement this data source component, this data source interface. And when I say that order manager component will require this inventory checker interface, I mean that the order class inside this order manager component will actually require this inventory checker interface. So if you want to provide this specific information, you use this delegation connector. अगर delegation connector पोर्ट से क्लास की तरफ आ रहा है, किसी क्लास की जगह कुछ और भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं क्लास हो. क्लास की जगह एक यूज केस हो सकता है, क्लास की जगह एक स्टेट डायग्राम हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. अगर पोर्ट से आप किसी क्लासिफायर की तरफ जा रहे हो, इट मींस दैट दैट क्लासिफायर विल इंप्लीमेंट दैट इंटरफेस. और अगर आप किसी क्लासिफायर से पोर्ट की तरफ आ रहे हो, दैट मींस दैट क्लासिफायर एक्चुअली रिक्वायर्स द इंटरफेस दैट आर कनेक्टेड टू दैट पोर्ट. दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है. Now there are some stereotypes also with the components also. मतलब अगर आपने कंपोनेंट डायग्राम बनाया है, suppose this is my component, तो कंपोनेंट में भी स्टीरियोटाइप यूज कर सकते हो to specify कि exactly वो कंपोनेंट क्या है. फॉर एग्जांपल you a component is a application, means the user interface basically. आपको स्क्रीन पे शो होता है, कोई भी GUI शो होता है, कोई भी यूजर इंटरफेस शो होता है, that can be application. If you write the stereotype as data store, it means that this component is a location where all the data for your software are going to be stored. If you name a stereotype as a document, this means this component is a document. Because I've told you component doesn't mean any physical thing. It can be a software, it can be application, it can be a data store, it can be a document, it can be anything. जो मैं अगली 3 स्लाइड में बताऊंगा वही. In the exam I will give you or I will ask you which of the following is not a stereotype or a component stereotype and you have to pick that out. तो जितने ये 3 स्लाइड में लिखे हैं बस इतने ही होते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं होगा. फाइन. एंटिटी. एंटिटी का मतलब है इसका खुद का कोई फंक्शनैलिटी ना हो. दे आर लाइक इंटरफेसेस. ओके.
Executable, for example, this component is a .exe file. So this means this component is a executable file of your code. जैसे .exe file होती है ना, जो machine code होता है finally, .exe. So if I write a stereotype as .exe on a component, that will mean that this component is a executable file. Node क्या होती है, that we will see in the deployment diagram. A component can be a normal file also. A component can be infrastructure. Infrastructure means any technical component inside your system. Okay, technical component से मतलब है, suppose you have made a piece of code for say 2G spectrum. आपने 2G spectrum बनाने के लिए piece of code लिख रखा है that how the 2G spectrum code 2G spectrums are going to work. So that is an infrastructure. Okay, so अगर stereotype infrastructure use करोगे तो यूजर को पता चल जाएगा that this is going to be some physical infrastructure जिसको मैंने as a piece of code show किया है. You can show a stereotype as a library also. This component is a library in itself. It can be a process also. प्रोसेस मतलब वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस पड़े, जब तक नॉर्मल प्रोग्राम है, जब प्रोग्राम उठ के रैम में आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है, राइट. इट कैन बी नॉर्मल प्रोसेस ऑल्सो जो होने वाला एग्जीक्यूट. बेसिकली सब आपको यूज नहीं करने, बट जस्ट कीप दीस नेम्स इन योर माइंड. ओके, फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन अगर इफ आई एम राइटिंग रियलाइजेशन कंपोनेंट, इफ आई एम राइटिंग रियलाइजेशन स्टीरियोटाइप ऑन अ कंपोनेंट, इसका मतलब है ये कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करेगा खुद से. दिस कंपोनेंट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. This component will realize some another component. This is the meaning of realization base. Realization stereotype. It can be a service. Service means for a particular period of time. If a component, अगर किसी component का stereotype में service दे दूं, if I give you a question like this, that this is a component, इसका stereotype है service. Service का मतलब है this will be for a particular short period of time and it will not persist always. So is the lifetime of this component indefinite? Is the lifetime of this component infinite? No, right? This is a service component. This will be over, or this will be deleted, or this will be destroyed after a particular period of time. This is the meaning of service stereotype. Here, then you can have a source code in itself. अगर किसी प्रोग्राम का पूरा source code लिखना है किसी एक ही जगह, you can write that in a component also. You can name the component as a stereotype, the source code stereotype, and that would mean that this component contains some source code for any software or any application also. Okay, specification means they have interfaces but no implementation. मतलब इस interfaces तो होंगे, functions तो define होंगे इस component के अंदर, functions तो declare होंगे इस component के अंदर, but उनको कभी भी define नहीं करेंगे. अगर normally interface बनाते हैं, if normally we make a interface, उसको किसी ना किसी class या किसी component से connect करते हैं. Fine, मतलब ये जो interface है, this will be implemented by this component. But if you are using specification, अगर आपने specification stereotype use किया किसी component के ऊपर, that would mean that this component is not going to implement any interface. ये require कर सकता है interface, but कोई implement नहीं कर सकता. Fine. Then you can have a subsystem also. Subsystem means sub part of this component. For example, this is not a whole component. This is a part of a component. किसी बड़े component का छोटा सा part. This is the meaning of subsystem. Okay. Then you can have a table, web service, XML, DTD. नाम से पता चल रहा है क्या होने वाला. Table मतलब अगर कोई table if you want to show that this component is nothing but it contains tables of any database, you can show it with the help of a table stereotype. If you want to show that this is a web service, a email service का component है, this component sends emails only, you can use web service. This component streams videos online, you can use the web service stereotype. और कोई अगर XML DTD फाइल्स है तो उसके लिए यूज कर सकते हो स्टीरियोटाइप्स. ओके, तो बेसिकली जितने नाम 3 स्लाइड्स में लिखे हैं, 4 स्लाइड्स में, ओके, फ्रॉम एप्लीकेशन डेटा स्टोर डॉक्यूमेंट एंटिटी से लेके DTD, इतने ही स्टीरियोटाइप्स पॉसिबल है इन योर कंपोनेंट डायग्राम्स. अगर इसके सिवा कोई होगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is it. Component diagrams में इतनी
explain that in detail. Any doubts you have, you ask me. With this, your component diagrams are finished. One last diagram is remaining, that is your deployment diagram. After that, your syllabus will be finished. एक deployment diagram बना है, that we will do in the next class. बहुत classes बची हैं, बहुत time है. So any doubts you have, you ask me. Otherwise, you can leave the class. Okay, then you can leave the class and be prepared. I will take surprise tests in the coming few classes. ठीक है, किसी भी क्लास में सरप्राइज टेस्ट होंगे, सारे पीपीटीज आपके अपलोडेड हैं ब्लैक बोर्ड पे. बी प्रिपेयर्ड, टेस्ट कैन बी एनी डे. हाँ क्षितिज बताओ. सर इन जो हमारे पास होते हैं कंपोजिशन और एग्रीगेशन. सर कंपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो जो दूसरी क्लास, अगर जैसे क्लास 1 और क्लास 2 है, उसमें एक क्वेश्चन आया था मिड में कि क्लास 1 के साथ क्लास 2 का कंपोजिशन है, तो उसमें बोला था इस क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1 और नॉट. सर एक बार वो एक्सप्लेन हो जाएगा. सॉरी, उसके बाद क्या बोला लास्ट में तुमने? सर कि क्लास 1 इज अ part 2 of class 1 is a part of class 2 or not. उसमें वो composition relationship है, तो सर एक बार वो explain. कंपोजिशन में पार्ट नहीं होता है. कंपोजिशन इज नॉट, एग्रीगेशन इज अ पार्ट ऑफ. अगर आप एग्रीगेशन यूज कर रहे हो तब आप बोलोगे, अगर सपोज ये क्लास 1, ये क्लास 2 है, क्लास 1 है, देन यू कैन से क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1. ये एग्रीगेशन में काम करता है, क्योंकि पार्ट का मतलब ये है कि अगर पेरेंट क्लास खत्म हो गया तो भी ये पार्ट एग्जिस्ट करेगा. कंपोजिशन में ये होता है तुम्हारा दैट अगर पेरेंट क्लास तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया तो चाइल्ड क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, एक बार वाली वीडियो फिर से वॉच करो जो मैंने ये पार्ट वाला बताया, उसमें मैंने दोनों ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं क्षितिज. ओके, किसको पार्ट ऑफ बोलना है, किसको नहीं बोलना है. तो एग्रीगेशन की अगर बात करूं तब यू कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ. एग्रीगेशन के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, कंपोजिशन के लिए वो ट्रू नहीं है. एंड सर जो कंपोजिशन में सर होता है कि क्लास 1 के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं क्लास 2 के, वो किस में होता है सर? क्या क्लास 2 के? जैसे क्लास 1 और क्लास 2 है, उसमें एक रिलेशनशिप है. मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं एग्रीगेशन कंपोजिशन. तो सर उसमें होता है कि क्लास 1 के सारे डेटा मेंबर से जो भी क्लास 1 में प्रेजेंट है वो क्लास 2 में है, ऐसा. वो तो इनहेरिटेंस होता है ना. सर कंपोजिशन और दोनों में से नहीं होता कुछ ऐसा कि क्या बोलते हैं अगर क्लास 1. एग्रीगेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेशन का देखो मैं मतलब बताता हूँ. सपोज यू हैव अ मॉनिटर, यू हैव अ कंप्यूटर. ठीक है, एक कंप्यूटर है, मॉनिटर. ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट हो सकता है कीबोर्ड भी, कंप्यूटर का पार्ट हो सकता है एक माउस भी, कंप्यूटर का पार्ट हो सकता है एक सपोज सीपीयू भी. ठीक है, बट व्हेन आई एम सेइंग आई एम डिस्ट्रॉइंग दिस कंप्यूटर, इट डजंट मीन दैट कीबोर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सीपीयू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, माउस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये आपस में एग्जिस्ट करेंगे इंडिविजुअली. इफ आई एम सेइंग यू हैव अ ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी है, इसका हैंड जो है, इसका लेग जो है, सपोज ये अलग अलग क्लासेस है और ये आपस में कंपोजिशन से रिलेटेड है. तो अगर आपने ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो डेफिनेटली हाथ भी जाएगा और पैर भी जाएंगे. दिस इज कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, अ व्हाट्सएप मैसेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट व्हाट्सएप एप्लीकेशन इटसेल्फ. अगर एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है और एक व्हाट्सएप मैसेज है, तो WhatsApp message cannot exist without WhatsApp application also. If you will delete or uninstall the WhatsApp application, WhatsApp message भी automatically uninstall हो जाएगा. This is composition. This is composition. ओके सर. तो एग्रीगेशन का मतलब ये है कि हाँ, मैंने अपलोड कर दिया उधर. सारी पीपीटीज आपके अपडेटेड है. ठीक है, एक बार सारी पीपीटीज पढ़ लेना. Till this point all the PPTs are uploaded जो हमने component diagram पढ़ा है. Watch the read the PPTs again. Watch the recordings if you have forgotten anything. क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है आपका. ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, बस एक डायग्राम और बच रहा है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम. एक क्लास में ही होंगे टेस्ट, और जो भी टेस्ट होने हैं, सरप्राइज टेस्ट सिर्फ 2 वो होंगे, वो क्लास में ही होंगे, किसी भी क्लास में, यहाँ से लेके एंड सेम तक. बेसिकली 1 महीना बचा है, लास्ट नवंबर वाला. इसमें से 1 वीक तो आपका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में हो जाए.
नेक्स्ट एक मंथ में आपके 2 सरप्राइज टेस्ट होंगे, ठीक है। तो सी टोटल यू हैव गिवन असाइनमेंट एंड 2 टेस्ट टिल नाउ, ठीक है। एक असाइनमेंट में और दूंगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, दैट यू कैन सबमिट। तो टोटल 2 असाइनमेंट्स यू विल हैव, उसके होंगे 30% मार्क्स। 2 टेस्ट आप लोगों ने दे दिए हैं, 2 सरप्राइज टेस्ट होंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा पूरे सिलेबस का, वो मैं बता के लूंगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का प्लान है, नवंबर के लास्ट वीक में लूंगा। सो टोटल 5 टेस्ट यू विल हैव, दैट विल कंप्राइज ऑफ 50% मार्क्स। 80% आपके इंटरनल के ये मार्क्स हुए, 20% मैं दूंगा बेस्ड ऑन योर क्लास परफॉर्मेंस। दिस विल कंप्राइज योर 100% मार्क्स फॉर इंटरनल। चलो, we'll meet in the next class. Thank you.